हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक की जो सेकंड चैप्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, इसके मैं आंसर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपके लिए इसी लेसन के तमाम पैराग्राफ का जो ट्रांसलेशन है वो डिस्कस किया था। सो जिस स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत पेश आ रही है वो मुझसे रब्ता लाजमी करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करेंगे। जिसको नहीं मिल रहा ट्रांसलेशन तो मैं उनको गाइड कर दूँगी, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लाजमी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मेरे जो चैनल पे जितनी भी मैंने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स के हवाले से मैंने लिंक भी सेंड किए हुए हैं और मैंने उर्दू की जो जितने भी असबाक हैं यानी कि नज़में हैं वो मैंने डिस्कस की हैं। पहली नज़म की तशरीह की है हमद की और जो दूसरी नज़म है नात, उसकी तशरीह भी मैंने बता दी है। अच्छा, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश की पहला जो लेसन है उसका मुकम्मल मैंने तर्जमा, ठीक है, और इसकी पहले सबक की जो आंसर क्वेश्चन है वो भी मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको फ़र्स्ट लेसन की सेकंड लेसन की एक्सरसाइज भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट भी कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी परेशानी है मुझसे डिस्कस करें। फर्स्ट ईयर की न्यू बुक्स के हवाले से मैंने जितने भी वीडियोस हैं और जो लेक्चर्स हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं। तो चलिए चलते हैं इस सबक के आंसर क्वेश्चन की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, What major challenges did Pakistan face immediately after its independence as highlighted by Qaid-e-Azam? Answer है, after independence, Pakistan faced a huge refugee crisis with millions needing shelter and aid. Law and order had collapsed due to communal violence. The country had weak economic resources and no proper banking system. There was a lack of administrative infrastructure and trained officials. India delayed Pakistan's share of financial and military assets. The Kashmir issue became a major political and territorial conflict. Second question है, according to the Qaid, what is the difference between the freedom and license? The answer is, according to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, freedom means living within the limits of law and order with a sense of responsibility, discipline, and respect for others' rights. It gives people the right to express themselves, practice their beliefs, and contribute to the nation positively. On the other hand, license means doing whatever one wants without caring about rules, discipline, or the impact on society. Qaid-e-Azam warned that license leads to cause while true freedom leads to progress and unity. Third question, why does Qaid-e-Azam emphasize the need for technical education in Pakistan? And the answer is, Qaid-e-Azam emphasized technical education to build a strong and self-reliant nation. He believed it would reduce dependence on foreign experts. Technical skills are essential for industrial and economic development. He wanted the youth to gain practical knowledge for national progress. Educated and skilled citizens can solve the country's problems effectively. He saw technical education as the backbone of a modern Pakistan. नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करियर्स इन कायद-ए-आज़म मैसेज टू द यूथ। तो इसका जो आंसर है, कायद-ए-आज़म एम्फसाइज्ड द importance of self-reliance to build a strong
and independent nation, he believed that relying on others weakens both individuals and the country's self-reliance, encourages confidence, responsibility, and innovation among youth. He advised young people not to depend solely on government jobs. Instead, he urged them to explore other fields like business, industry, agriculture, and technical professions. Diversification of careers leads to economic stability and national growth. It opens up multiple opportunities and reduces unemployment. Qaid wanted youth to become creators of jobs, not just seekers. This approach helps develop all sectors of society equally. A diverse workforce brings resilience and creativity. His message inspires a progressive, self sufficient, and hardworking generation. डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. इफ़ यू वर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्यूरिंग कायद आज़म टाइम, हाउ वुड हिज स्पीच इन्फ्लुएंस योर करियर चॉइसेस? The answer is, if I were a university student during Qaid Azam's time, his speech would deeply influence my career choices. I would feel inspired to serve the nation with dedication and honesty. His emphasis on self-reliance would encourage me to choose a career where I can contribute directly to Pakistan's development. I would consider fields like science, technology, or business, instead of aiming only for a government job. His rejection of the clerk mentality would push me to think creatively and independently. I would aim to become a job creator, not just a job seeker. His vision overall, Qaid's speech would shape me into a responsible and visionary professional. So next question जो आपको नज़र आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है. बाय मिस्टेक मुझसे 7th मैंने लिख दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज़ द रिजेक्शन ऑफ द क्लर्क मेंटेलिटी इम्पोर्टेंस फॉर a newly independent state as per Qaid's vision? The answer is, rejection of the clerk mentality is crucial for a newly independent state as per Qaid Azam's vision because it limits creativity and ambition. The clerk mentality reflects a mindset of dependency and routine work with no innovation. Qaid wanted the youth to break free from this narrow thinking. Industry or commerce over government jobs is highly relevant. The modern economy thrives on entrepreneurship, innovation, and private sector growth. Relying only on government jobs leads to limited opportunities and unemployment. Fields like commerce and industry offer vast potential for job creation and national development. Banking plays a key role in financial stability and economic planning. Qaid's vision encourages youth to be productive and independent. Private sector careers foster competition, efficiency, and skill development. Today's world demands flexibility and creativity, not just routine office work. Choosing diverse fields reduces pressure on government employment. In sports, a balanced economy, Qaid's guidance still lights the path toward the progressive and self-reliant nation. Interpret and analyze the following statement of the speech. फर्स्ट ए का क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस. इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज एंड डू व्हाट यू लाइक इन इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल्स और ऑफ द state. Answer है, this statement highlights the responsible use of freedom. Freedom does not mean acting without rules or limits. It is not a license to harm others or ignore the law. True freedom comes with duties and respect for others' rights. A free society must protect the interests of all, not just individuals. Personal actions should not damage national unity or peace. Irresponsible behavior weakens the foundations of a state. Freedom must be used wisely for progress and harmor. It requires discipline, tolerance, and awareness. Rights and responsibilities go hand in hand. Without limits, freedom turns into cause, not liberty. B question है, it is
far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. Answer है, this statement by Qaid Azam emphasizes the greater challenge of nation building. After achieving freedom, he acknowledges that having a militant or revolutionary spirit is important for gaining independence. However, once freedom is attained, the real and more complex task begins: constructing a stable, just, and prosperous nation. This includes establishing effective governance, legal system, and economic structures. It requires unity, discipline, education, and by emotion, but construction needs wisdom, planning, and patience. Building a nation also involves addressing social issues, protecting minority rights, and promoting harmony. He reminds the people that passion alone is not enough, responsibility is key, freedom is not the end goal, it is the beginning of a harder journey. True success lies not just in gaining independence but in sustaining and strengthening it. Therefore, construction is more demanding than the struggle for freedom itself. सो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम देखेंगे. देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड labor. There is an immense scope in technical education for we want technically qualified. सो आपने तमाम जो क्वेश्चन है वो देख लेने हैं. पीपल वेरी बैडली. डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए सब, और अगर किसी भी क्वेश्चन के हवाले से या किसी भी वीडियो के हवाले से कोई परेशानी है तो लाजमी बताएं. द स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ मैनुअल वर्क and labor, stating clearly that there is no shame in engaging in such tasks. It aims to break the social stigma that often looks down upon physical or hands-on work. The emphasis is on the value of hard work and the need for skilled manpower. In today's developing world, technical education plays a vital role in national progress. The demand for technically qualified people is very high. Nations thrive when they have engineers, electricians, mechanics, and other skilled workers. These professionals contribute directly to industrial and economic development. The statement encourages youth to pursue technical skills instead of relying solely on academic degrees. It also promotes self-employment and entrepreneurship through skill-based education. Technical education lead to innovation and यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, आपने अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेना है, और मैंने कोशिश की है डियर स्टूडेंट्स कि आपके मसाइल जो हैं न्यू बुक्स के हवाले से वो सॉल्व हो सकें. इनोवेशन एंड इंडिपेंडेंस. ओवरऑल इट इज़ अ कॉल टू रिस्पेक्ट all forms of work and recognize the power of practical skills. So dear students, हमारा जो सेकंड लेसन था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही साथ मैंने इसकी जो एक्सरसाइज़ है वो भी आज मैंने कंप्लीट करवा ली है. एक्सरसाइज में हमारे आंसर क्वेश्चन थे. आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें कि अगर आपको कंप्लीट जो ग्रामर का पार्ट है इसी बुक के हवाले से अगर वो चाहिए तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी ग्रामर भी करवा सकूँ और इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं करवा सकूँ. सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें ताकि आपके जो परेशानियाँ हैं उसका हल मैं फ़ौरी तौर पर निकाल सकूँ. उर्दू के लेक्चर्स न्यू बुक के मैंने अपलोड कर दिए हैं. फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसकी भी मैं अपलोड साथ ही साथ कर रही हूँ. तो आखिर में यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, और इस वीडियो को और पिछली वीडियोस को शेयर लाजमी करें, ताकि आपके साथ साथ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के न्यू, उनके बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं हर एक बुक के हवाले से. उनको किसी को लिंक नहीं मिल रहा होता, किसी को पहला पार्ट मिल रहा होता है एक वीडियो को और दूसरा नहीं मिल रहा होता, तो उनको मैं फ़ौरन रिप्लाई करती हूँ. तो आप मुझे मैसेज भी करें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं. ओके, अपनी दुआ में याद रखें. फ़ी हमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.